Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English Grammar for class 7 and this is lecture number 35. My dear students, today we will learn lesson 9, Future Perfect Continuous Tense. Let's discuss the definition of Future Perfect Continuous Tense. The future perfect continuous tense is used to talk about an action which will start, continue and end in the future. ऐसा कोई भी काम जो मुस्तक़बिल में शुरू हुआ हो, मुस्तक़बिल में जारी रहे और मुस्तक़बिल में ही एंड हो जाए, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, और इसकी फॉर्मेशन कैसी है? हाउ वी कैन form a sentence. We can form a future perfect continuous tense sentence with a subject plus will have been or shall have been. You know very well we use shall have been with I or we, and will have been with all other pronouns and nouns. ठीक है, हम shall have been यूज़ करते हैं I और we के साथ. I shall have been, we shall have been और will have been यूज़ करते हैं बाकी सारे pronoun और nouns के साथ. ठीक है, then present participle यानी fourth form of the verb, ing form of the verb, then object, then since और for, और फिर आखिर में time duration यानी since morning और for 2 hours, इस तरीके से. ठीक है, now let's see some examples. Examples of future perfect continuous tense. First we have affirmative sentences, then negative and then interrogative. Number 1, I shall have been. As you know, we use shall have been with I or we. ठीक है, so I shall have been reading this book since 10 a.m. Number 2, they will have been, and you know we use will have been with all other pronouns and nouns except I or we. ठीक है, आई और वी के अलावा हम सब के साथ क्या यूज़ करते हैं? विल हैव बीन. दे विल हैव बीन राइटिंग एसेज फॉर 2 hours. नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 a.m. They will not have been writing essays for 2 hours. ठीक है, तो हमें क्या करना है? नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ shall के बाद या will के बाद not पुट करना है. ऑलराइट, और नेक्स्ट वी हैव इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सेंटेंस शुरू करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? shall. शैल के बाद जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा हम वो लिखेंगे. ठीक है, ये शैल यहाँ आ गया. शैल आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन एंड द रिमेनिंग सेंटेंस वुड रिमेन सेम. ठीक है, शैल आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 a.m. एंड वी पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आखिर में क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. ऑलराइट, नेक्स्ट, will they have been writing essays for 2 hours? Question mark. All right, I hope you have understood very well how to make affirmative, negative and interrogative sentences of future perfect continuous tense. Now take out your books and open page number 29 for book exercises. Okay,
On page number 29 we have exercise A. Fill in the blanks with the correct forms of verb to make future perfect continuous tense. ठीक है, ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, हमें इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है ताकि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाए. एंड यू नो वी मेक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विद अ सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन और विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट के साथ या तो शैल हैव बीन या तो विल हैव बीन. ठीक है, और जो फिर आगे जो भी वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं. ठीक है, अच्छा, तो शैल हैव बीन हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ. ठीक है, तो ये 5 सेंटेंसेस में देखते हैं आई और वी कहाँ पर है. तो सिर्फ सेकंड में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आई. इट मीन्स कि हम शैल हैव बीन सिर्फ इसमें यूज़ करेंगे. आई शैल हैव बीन राइटिंग सम आर्टिकल्स इन डेली जंग सिंस जनवरी 18th. ओके, और बाकी सब में विल हैव बीन. लाइक शानी will have been blaming others for his mistakes for whole life. Number 3, they will have been sharing their work till the end of this month. Number 4, Sana and Ali will have been reciting the verses for hours. Number 5, my elder brother will have been coaching me for the exam since March. Okay, now look at the board for the answers. Answers of exercise A. Number 1, will have been blaming. Number 2, shall have been writing. Number 3, will have been sharing. Number 4, will have been reciting. Number 5, will have been coaching. Okay? And its exercise B and C will be your homework. ओके, एक्सरसाइज बी और सी आपका होमवर्क है. नाउ ओपन पेज नंबर 30 फॉर एक्सरसाइज डी. ऑन पेज नंबर 30 एक्सरसाइज डी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. नंबर 1, वो हमेशा सच बोलता रहेगा. ठीक है, तो हमें इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करना है. ही विल हैव बीन स्पीकिंग द ट्रुथ always. Number 2, क्या अब्बू हमारे लिए सारी जिंदगी मेहनत करते रहेंगे? Will the father have been working for us all his life? Number 3, बेवकूफ़ लड़के अपने पैसे ज़ाया करते रहेंगे. बेवकूफ़ लड़के, stupid boys will have been wasting their money. Number 4, वो 1 महीने से ईद की खरीदारी कर रही होगी. She will have been shopping for Eid for a month. Okay, and the 5th one is your homework. Now look at the board for the answers. Exercise D, translation, and here we have the translated sentences. He will have been speaking the truth always. He will have been speaking the truth always. Number 2, will the father have been working for us all his life? Question mark. Will the father have been working for us all his life?
Number 3, stupid boys will have been wasting their money. Stupid boys will have been wasting their money. Number 4, she will have been shopping for Eid for a month. She will have been shopping for Eid for a month. And number 5 is your homework. Alright, that's all for today. Here we have completed another chapter of the grammar. And I hope you have enjoyed and understood well. We will meet inshallah in the next class. Assalamu alaikum.